Assalamu alaikum ji. Hope you're all doing really good. It's been a week since I got back from my holiday और पिछले हफ्ते मेरा पूरा इरादा था कि मैं एक 101 करूँगी अपने ट्रैवल पे और अपनी हॉलिडे पे और एक जिसे कहते हैं ट्रैवल गाइड दूंगी बड़े पर्सनल किस्म का। लेकिन फिर मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए कि नीयत भी डगमगाई। ऑब्वियसली थिंग्स वर रियली रियली बैड लास्ट वीक। खान साहब गॉट अरेस्टेड और बीच में फिर ये भी सोचा कि मैं मुल्क के हालात पे एक 101 करूँ, लेकिन वो बहुत ही ग्लूमी हो गया था। इट वाज लाइक रियली डिप्रेसिंग, तो वो मैंने रिकॉर्ड करके और ट्रैश करा दिया। सो इससे पहले कि टुडे इज 101 बाय द वे इज अ पर्सनल ट्रैवल पीस, नॉट अबाउट वेयर आई वेंट एंड व्हाट आई डिड, बट इट्स एडवाइजरी from my personal experience, what to do, what not to do when traveling on holiday, क्योंकि हॉलीडे सीजन शुरू हो रहा है, समर्स शुरू हो रहे हैं और बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। सो लॉट ऑफ पीपल प्लान देयर ट्रिप्स अप नॉर्थ, अब्रॉड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये मैंने अपनी ट्रिप से हुआ हूँ और मेरी पर्सनल एडवाइजरी है कि आप क्या कर सकते हैं और मेरी गलतियों से सीखते हुए क्या अवॉइड कर सकते हैं। बट इससे पहले दैट आई स्टार्ट ऑन माई ट्रैवल एडवाइजरी, अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टुडे। एंड I want to be very clear that yes, I am an Imran Khan supporter. And why am I an Imran Khan supporter? Simply because I feel that Pakistan के जो 75 साल हैं, 75 years of Pakistan's existence, he has been in the government for 3.5 years. The remaining years, अब मेरा हिसाब इतना अच्छा नहीं है, लेकिन I think 71.5 years, he is not responsible for the mess that Pakistan and we are in today. All those political parties who have been in the government these past 7 decades, political parties, martial laws, establishment, whoever has been in charge of Pakistan in these last 7 decades, maths aap khud kar lein, those are the people responsible for the state we are in today. Khan Sahab is not responsible for that. 3.5 साल काफ़ी नहीं थे। उन्होंने जो चेंजेस किए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं एंड इट वाजंट इनफ फॉर हिम टू टर्न द कंट्री अराउंड। सो ये कहना कि जी ओ उन्होंने क्या किया, 70 साल की गलतियां जो हैं वो 3 साल में ठीक होने वाली नहीं थी। बहरहाल ये बात है कि उनकी वजह से मुल्क इस वक्त जो हालात में है, इट्स नॉट हिज डूइंग एट ऑल। दूसरी चीज़ ये है कि जस्ट बिकॉज आई एम एन इमरान खान सपोर्टर डजंट मीन दैट आई एम oblivious to the mistakes that PTI has made, or I'm oblivious to policies of his that I don't agree with. There are a lot of things that I don't agree with. But we're not blind supporters. But I do think he's the only hope for Pakistan. And I hope that hope will always remain for Pakistan because हमारी जान जुड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ। तो ये था छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज और मेरी तरफ से प्लेजिंग माई सपोर्ट टू इमरान खान। अल्लाह मियाँ उनकी हिफाजत करे और इस मुल्क की हिफाजत करे और अल्लाह मियाँ हमें एक बेहतर मुस्तकबिल दिखाए। और ये बात है कि वो उनकी वजह से वो मुस्तकबिल आए ना आए, जिन लोगों की वजह से मुल्क आज इस डगर पे खड़ा है उनकी वजह से तब्दीली नहीं आएगी कभी भी। सो ये बात डिटर्मिन्ड है। चलें जी, with that out of the way, we're going to step into my travel and travel advisory, what to do, what not to do when on holiday. So as you all know, and I've spoken about this a lot, मेरा एक पर्सनल रेजोल्यूशन है कि मैं हर साल एक नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करूं और पिछले 4-5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू डू दैट इवन थ्रू द कोविड ईयर्स। भले वो कोई वर्क ट्रिप होता या पर्सनल ट्रिप होता, मैं कर पाई। मैंने बहुत सी लोकेशंस ऐसे देखी जो पहले नहीं देखी हुई थी। मालदीव्स गई, टर्की गई, बैरूत गई, उससे पहले आई डिड इटली, डिड स्विट्ज़रलैंड। सो अल्हम्दुलिल्लाह I have been managing that resolution well. इस साल मैंने सोचा कि जी मुझे पेरिस देखना है और एडवाइजरी की पहली चीज़ ये है कि टिप नंबर 1 that when you're planning a trip, start planning a good 4 to 6 months in advance. पहली चीज़ तो ये है कि डॉलर इतना महंगा हो गया है कि आपने अपनी जो फाइनेंसेस है और बजटिंग है वो 6 महीने पहले से शुरू करनी है। एंड इफ़ यू प्लान टू गो अब्रॉड देन यू वांट टू प्लान योर बजट एंड योर फाइनेंसेस वेरी वेरी केयरफुली। तो आप मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को कहा हुआ है कि जी मैंने 6 महीने बाद अगर ट्रैवल करना है, एयरलाइंस की डील्स आती हैं, बड़े अच्छे अच्छे इनके पॉकेट्स होते हैं, आप उस वक्त टिकट खरीद लें अपना and just keep fishing for those deals because believe me you will get a very very good deal if you are planning in advance.
तो पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ का आपने टिकट लेना है वहाँ अपने ट्रैवल एजेंट को इंटीमेट कर दें 4 से 6 महीने पहले कि भी आपने जाना है क्या इरादा है, और वो देखना शुरू कर दें कि जैसे ही डिप्स आते हैं प्राइसेस में आप अपना टिकट खरीद लें। कई एयरलाइंस होती हैं जो डील्स देती हैं, कई एयरलाइंस सस्ती होती हैं। अगर आप जवान हैं, ख्वारी कर सकते हैं, सो टेक 2 or 3 breaks in your travel, plan it accordingly. Second thing is that if you're going abroad, then put away your money, your finance for that trip well in advance. अगर आपने ट्रैवल करना है डॉलर्स ख़रीद के रख लें, बिकॉज डॉलर कम तो होने वाला नहीं है, बढ़ता ही रहेगा। और मैंने एग्जैक्टली ये किया। मेरे लिए सबसे बड़ा धचका होता है कि आप क्रेडिट कार्ड लेके मुल्क से बाहर जाते हैं, यू स्टार्ट स्पेंडिंग, वेदर यू स्पेंडिंग ऑन फूड, ऑन ऊबर्स, ऑन बसेस, ऑन ट्रेन्स, ऑन शॉपिंग, यू नो, और टिकट्स, ये वो। व्हेन यू स्टार्ट स्वाइपिंग दैट कार्ड, उस वक्त तो आप कर रहे होते हैं, जब आप वापस आते हैं और आपका बिल आता है तो आपकी जो है ना आप ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। इट्स अ शॉक हिट्स यू इन द फेस। सो आई वांटेड टू अवॉइड दैट। दूसरी चीज़ ये है दैट इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान and you're taking your local credit card outside of Pakistan, you will be hit with a lot of additional costs, and I have those written down. So पहली बात तो ये है कि जब आप डॉलर में स्पेंड करेंगे तो आपको एक बहुत ही हाई कन्वर्जन रेट लगेगी आपके क्रेडिट कार्ड पे। सेकंड चीज़ जो आपको लगेगी हर ट्रांजैक्शन पे, देयर इज़ गोइंग टू बी अ फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी, then an advance tax on that foreign transaction fee, then an FED on foreign transaction fee. So over and above that initial high conversion rate, there are 3 additional taxes that you will be hit with on each and every transaction. So that's going to be a 20-25% increment on every transaction. You don't want that. If possible, and this is what I did, कि मैंने सोचा कि मैंने इतने X amount of euros जो हैं वो पेरिस में और जिनेवा में खर्च करने हैं, मैंने उनको पाकिस्तान में कन्वर्ट करके ख़रीद के और मेरा बेटा जो यूके में पढ़ता है उसके अकाउंट में डाल दिए, एंड आई जस्ट यूज्ड हिज कार्ड। सो यू नो, ऑफ कोर्स वो इवन बिटवीन यूके एंड France and UK and Switzerland, there was a little bit of a conversion fee, but not as much as it would be between Europe and Pakistan. So try and be sensible about these expenses and these taxes that you're going to be hit with. If it comes to an emergency, of course, mere bhi wo euros khatam ho gaye the, and at the end of the 2 days, I did have to use my local card. But had I been using it for 10 days, तो मेरी cost कहीं 2-4 लाख ऊपर तो कहीं नहीं गए थे। So इस चीज़ का ख्याल करें और एडवांस में ये पैसे साइड पर रख लें और कोशिश करें कि उससे ज़्यादा खर्च आप करें ना। That was point number 1. Point number 2 is work on your pre-trip stamina and your physical abilities. Again, start working on it 6 months in advance. If you're going to an adventure holiday, obviously you have to be fit enough. अगर आपको नूर की तरह स्काई डाइविंग करनी है तो आपको फिट होना है। अगर आपको अफ्रीका जाना है या किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ बहुत चलना पड़ता है, जहाँ पे rugged terrain है, या you're going to Greece where there are a lot of steps, you need to be able to handle that exercise. But even if you're going to the northern areas in Pakistan, you better be in good shape because पहाड़ों पे चढ़ना उतरना आसान नहीं होने वाला। मगर even अगर आप किसी ऐसी हॉलीडे पे जा रहे हैं, it's a urban holiday जहाँ पे बहुत वॉक करना पड़ता है, so मेरे जैसा बंदा जो एक completely sedentary lifestyle गुजारता है और मुश्किल से अगर वॉक करे तो 1-2 किलोमीटर दिन में कर ले, उसके लिए 10,000 स्टेप से ऊपर जाना तो मौत थी बिल्कुल। The day I went over 10,000 steps, मेरी टांगों ने जवाब दे दिया बिल्कुल। I was like, I was dragging my feet all over Paris, and my friend who was with me is witness to it. And मेरे पाँव सूज गए, मेरा बहुत बुरा शुरू हुआ था, and I had to come back and take, pop a Caflam every day because I was in bad shape. So, and I've learned my lesson, I hope, and for next year I will start walking, and I should start walking now. But build your stamina and be in a shape to enjoy what you're going for, and to, for example, जिस साल में Maldives गई थी, Maldives के आप island पे जाते हैं, आपका hotel पूरा island होता है, and you want to walk all over the island. So, at that point, I wish I knew how to ride the cycle, because मेरा बड़ा दिल था कि मैं अगर साइकिल पे होती तो मैं पूरे island पे जाती, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। तो मैंने सोचा कि आइंदा मुझे किसी ऐसी जगह पे जाना पड़े जहाँ साइकिल चलानी पड़े, तो I
wish I had learned when I was young enough. And but if you're going to a beach holiday, for example, or you're going somewhere where there is water, you do need to know how to swim. Otherwise, you will not be able to enjoy it to its fullest capacity. So yeah, आपको 6 महीने पहले पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, अगर ये आपकी एनुअल वो वाली हॉलिडे है, और उसको अकॉर्डिंगली प्लान करें. Tip number 3, when you are ready to go, you need to pack smart. And this is something that I have still not learned, and I always overpack and I always regret it. So ये आपने ओवर पैकिंग ऑफ कोर्स नहीं करनी, बट हाउ डू यू पैक स्मार्ट. एक तो ये है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आप किसी अर्बन डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो यू विल, एंड इफ यूर इन अ होटल, यू विल हैव एक्सेस टू लॉन्ड्री सर्विसेज. इवन इफ यू आर नॉट वांटिंग टू पे फॉर द होटल लॉन्ड्री, आस पास में कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी. सो मिनिमम लेके जाएं. अगर आप urban destination पे जा रहे हैं, you will end up buying clothes, and you can always wear those clothes that you are buying. And this is exactly what I did. I took, as in not that I did this, this is exactly the mistake that I made. I overpacked. I was going for 10 days. I took 5 plus 2 pairs of trousers, which I didn't wear. I took too many jackets, which I didn't wear. I took too many tops, which I didn't wear. और जो मैंने जाके Geneva में shopping की, because by the way, Geneva has the best Zara in the world. I bought so many white shirts, and then I was like, yeah, I wish I hadn't carried so much into the city, because I would have worn these clothes aram se. So pack minimum. Pack minimum, and again, if you're going to a rural area or an adventure trip, so all you need is jeans and t-shirts anyway. Or you need your over covering if you're going to a cold destination. Otherwise, just pack light. पैक लाइट. एक जूते रखें, मत रखें ज़्यादा जूते. चलें, अगर आप अर्बन हॉलीडे पे जा रहे हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी कि आपके को फॉर्मल डाइनिंग होगी, तो एक आउटफिट ऐसा रख लें लाइट सा, एक जूता रख लें जो फॉर्मली आप कर सकें. अदरवाइज पैक एज लिटिल एज पॉसिबल, पैक एज लिटिल मेकअप एज यू कैन. Don't pack heavy accessories, don't pack bags and purses, and unless you're one of those influencers who has to look good every day and every picture, you will be carrying a lot. And when you pay for extra baggage at the airport, believe me, those rates are really high. I have friends who ended up paying 1.5 lakh रुपए at the airports because उनका baggage allowance खत्म हो गया था. So आपको वो बंदा नहीं बनना. Pack light, pack smart. मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसको 2.5 से डिवाइड करें, और उतने कपड़े आपके होने चाहिए. पैक फॉर अ वीक. पैक योर अंडरगारमेंट्स फॉर अ वीक, पैक योर शर्ट्स फॉर अ वीक, पैक योर पैंट्स फॉर अ वीक. एक हफ्ते के बाद आपको कहीं ना कहीं से फैसिलिटी मिल जाएगी where you can wash and recycle your clothes. And even if you don't, you can always wash your undies in your bathroom. So it is not worth it. I overpacked. I regret it. I promise I pledge to not overpack next year. Another important tip is to pack your medicines very carefully, because no matter where you're going, or European countries में या अगर आप cross Atlantic जा रहे हैं, तो travel insurance तो आपने पैसे दिए होंगे उस चीज़ के, but you still don't want to go to a doctor, and there are some things that you can easily avoid having to go to a doctor for. So मैं हर ट्रिप से पहले अपने GP के पास एक चक्कर लगाती हूँ. वो एक मेरी ओवरऑल हेल्थ एनालिसिस करते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. I always travel with anti-anxiety medication, always with painkillers, always with a stack of antibiotics if I need to. Alhamdulillah, I have not needed to yet, but still, ये चीज़ें होती हैं. विक्स की गोलियाँ, गले की ख़राबी की चीज़ें, पेट ख़राबी की चीज़ें, all of that. I'm somewhere in the middle of a perimenopause right now, so I never know when my cycle starts and stops. So I always keep medication with me, that if it does start at a time I don't want to, I will medicate and push it a few days. So be very careful about what you're packing in terms of medicines, but always carry a kitty of medicines with you, especially if you're my age. It is not wise to travel without medication.
G, tip number 5, what to do in a new city. So you're going to a new destination, you're really excited about it. Somebody like me will start reading about it voraciously. I want to know landmarks क्या हैं, शहर की history क्या है, demographics क्या हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी देखनी चाहिए. But start researching on the place you go, because that's the whole point of traveling, is that you educate yourself and you learn about new cultures and new societies and the history of new places. So you don't want to miss anything if you're in a new place. So of course Paris जाके तो 3 दफ़ा तो मैं आईफिल टावर गई, और वो कि हसन ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि मैं ऊपर नहीं गई, लेकिन नहीं, I went 3 times to the Eiffel Tower. I wanted to absolutely, absorb it in all its glory. And it's so interesting that the Eiffel Tower is this one metal structure in a city that is like thousands of years old and has so much ancient architecture and so much ancient painting and artwork that it's like an anomaly in the middle of the city, which makes it so beautiful. That contrast is spectacular, especially रात को. तो जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ अच्छी तरह रिसर्च करें कि आपने क्या क्या देखना है. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी सिविलाइज्ड फर्स्ट वर्ल्ड सिटी में जा रहे हैं, actually not even that, most places in the world, tourist destinations do have the red bus service, which is a hop on and hop off. और उसका फ़ायदा ये है कि आप एक उनका रूट होता है, उस पर आप सारे लैंडमार्क्स देख लेते हो. So we went to the tourism office in Paris, and they had brochures for everything that you needed to see in Paris. So we wanted to get the red bus, but then we were advised कि आप red bus ना लें. There is a toot bus which is green actually, because उसकी carbon emissions नहीं है. It's electronically, I think it runs. So we were advised to take that. We took that. And बड़ा अच्छा idea था मेरी दोस्त का, Farishta was with me, that we'll do one full circuit on the bus, एंड देन वी विल डिसाइड कि हमने उतरना कहाँ है और एक्सप्लोर कहाँ कहाँ करना है. सो हमने एक पूरा सर्किट किया पेरिस का, और वहाँ हमने डिसाइड किया कि जी हमने सेन पे उतरना है, लूव देखना है, और आई रियली वांटेड टू गो टू द लुई विटॉन स्टोर which is right down that road. So we got off there, and then we got off at the Champs-Élysées, where we walked down the Champs-Élysées, and then we saw the Arc de Triomphe, which of course I have not pronounced well, but those were the two areas that we got off, and we saw all of the city. So ये बड़ा ज़रूरी है कि आप landmarks देखें. एक चीज़ जो मेरी मिस हो गई, I really wanted to do Moulin Rouge, but उसके टिकट्स बिक चुके थे, and I didn't plan well enough in advance. अगर किया होता तो मैं पहले से ऑनलाइन टिकट्स खरीद लेती. So ये रिसर्च भी आपको पहले कर लेनी चाहिए. टिकट्स खरीद लिया करें पहले, because एन वक्त पे, especially if you're going in a heavy holiday season, आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे. So these are things you need to plan in advance. Next step is eat local. Eat local, especially if you're an adventurous eater like I am and you want to try local cuisine और उसकी क्या क्या खसूसियात हैं. You want to come back having said, oh my God, I went to Paris. Of course, I had a French croissant. And उसमें और यहाँ के croissant में से क्या फ़र्क है, या कॉफ़ी में क्या फ़र्क है. तो आपको ये आपकी बकेट लिस्ट एक होनी चाहिए कि जी आप एक जगह जा रहे हैं, ये चीज़ें तो आपने खानी है वहाँ पे. फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा जब मैं गई थी स्विट्ज़रलैंड, तो हमारा ये बकेट लिस्ट पे था कि जी ग्रुए जाके फॉन्ड्यू तो वहाँ का खाना ही है, मतलब वो चीज़ तो है. सो दिस टाइम इन पेरिस मेरी bucket list पे something very simple. I had to have the hot chocolate at Carrette, which is a really famous restaurant, a cafe, and they've got the most spectacular range of pastries. And I had to have that hot chocolate, which I did, and it was worth every euro that I spent on it. Of course, it's nothing that will blow your mind. I mean, it's a really, really good hot chocolate. मगर ऐसा नहीं है कि जी, oh my God, it's a eureka moment कि आपने पता नहीं क्या खा लिया है. Marketing उसकी branding इतनी ज़बरदस्त हुई हुई है that everybody who goes there has to have it. But it comes in a little teapot, and you get your pyali, and then when they're offering it to you, they said hot chocolate, cream, yes, and they said of course cream, and then you get a pot of cream which you dunk over the coffee, and you have it, and it's like calories, devilish calories that you're consuming, and you don't care because you're walking. So yeah, wherever you're going, try to eat local. हर जगह की cuisine फर्क होती है. फ़ायदा नहीं है अगर आप 5 दिन के लिए एक फॉरेन डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और वहाँ जाके आपने देसी खाना ढूंढना है, तो ये मत करें. एक बड़ा क्यूट कपल था हमारे साथ. We took the panoramic train from Geneva to Stade. The 4 days I was in Geneva, and it was a very cute couple sitting with us, and they said, we can't find anything good to eat, and we want to find local cuisine.
And I told them, don't look for local cuisine here. You're in Montreal. You don't want local cuisine. Eat what is available. Eat from the local produce. Be a little adventurous. Of course, keeping your religious sensibilities in mind, or your restrictions in mind. Be a little adventurous and eat what the area offers you. We went to this really cute little restaurant outside Geneva, और मुझे उसका नाम भी भूल गया. It was like a tavern, and their specialty was rotisserie chicken. इसके अलावा वो restaurant में कुछ नहीं बनता. And chickens rotate कर रही थी, and they give you a green salad. उसके बाद they give you these chicken on a hot plate ताकि वो गरम रहे, वो ठंडी नहीं होती. And then it comes with roasty potatoes, which were perfectly crusted, crispy and perfect. And then there's one dessert, which is like a creme brulee on a pizza dough or something. I don't know what. I'm sure there's a name to it, but that's it. It's a set menu, and पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने, and even Federer and all these tennis players who live there, they can be spotted occasionally. A lot of people come. It's reservation करनी पड़ती है. It's always chocker full, and it's a little motel as well. They have 6 rooms, so some place research करें कहाँ आपको खाना चाहिए, and come back with great memories. Next tip, and I know this is getting really long, but I hope I'm not boring you guys. Next tip is when you're shopping, especially for presents. Now, this is really important for all of us because हम लोग जब जाते हैं और उस वक्त हमें ख्याल नहीं आता, और जब हम वापस आते हैं हम कहते हैं यार ये थोड़ा intelligently कर लेते, ये ज़रा बेहतर कर लेते. So what have I learned after this trip? Because I made mistakes and I regret them. I regret not shopping better when you're shopping for gifts for people. मैं अपने लिए मेरी 2 souvenirs लाजमी होती हैं. एक तो I have to buy a fridge magnet everywhere I go, or a couple. And then the second thing is I have to buy some little knick-knack that goes onto my knick-knack cupboards, because I have like a little memory from everywhere I've ever been. But these things are for myself. Now, when I'm buying presents for friends and family, मैंने इस ट्रिप के बाद ये बड़े क्लैरिटी मुझे मिली है कि एक तो चीज़ है कि आपको इंडिजिनस चीज़ें ख़रीदनी चाहिए which are specific to that region. For example, if I'm going to Paris or Geneva, or if I'm going to Italy, I don't want to come back with a lipstick, that I could be picking up at Dubai duty free. I want to come back with something that tells my friends and family that I was thinking of them when I was, on holiday. So they were these beautiful fans at the Galleries Lafayette, and I wish that I had picked them up for everybody because they were light and they're beautiful and they have the entire landscape of Paris on them. So it's something. The important thing is that when you're buying presents for people, try and buy things that are light and don't take up too much space. और ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं. Novelty items, like these fans. They're so light, they're plastic, but they're beautiful and you don't get them here. या आप pill boxes छोटे-छोटे आपको मिल जाते हैं हर जगह से जहाँ पे artwork हो. If you go to museums in different cities, those are really good places to buy, for example, boxes of greeting cards, or novelty items that are cute, that are a bit quirky, that you don't get here, and that will give them something to remember you by. And again, it'll just reassure them that you were thinking of them when you were on holiday, and it will remind them of that area. So don't buy like commonplace casual things that you could buy at any duty free. Buy something from that area that will last them a lifetime of memories. And guys, my last tip is, although I should also give you a tip on how not to forget your phone on the flight, which I did. और अपने फ्लाइट से निकलते हुए याद करें आपकी कोई चीज़ रह तो नहीं गई, बिकॉज अगर रह गई है तो आपकी हॉलीडे तो तबाह हो जाएगी. मेरी अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई. And I want to give this huge shout out to Emirates right now, because they had a protocol. What happened was that I was sitting, I got up to get my overhead luggage. I started talking to the lady next to me, and my phone, which was on my seat, I forgot to pick it up, and I just walked out. As soon as I got to the lounge, to the departure lounge, I realized that, oh my God, I've left my phone. But I couldn't retract my steps. I couldn't go back. And when I went and complained to information, they said that you need to send an email to the lost and found at the Emirates airport, and they will find your phone. तो मैंने उनको email लिखी, उन्होंने मुझसे सब details मांगी. उनका response time 24 hours था. मगर they did get back to me. I sent them all details of my phone, my lock screen, कौन सा model है, क्या है, IMEI number क्या है उसका, etc. etc. और उन्होंने 2 दिन में
उनको फ़ोन उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड दिया. After 2 days, they responded that we have located and identified your phone. And the best part was, guys, and hats off to them, they asked me where I wanted it. And I said, I'm in Paris right now for another 2 days. And then they sent me the itinerary for my phone. They said that your phone is on this flight to Charles de Gaulle. It will be at this terminal, at this counter between this time and this time. You can pick it up between this time and this time. Just let us know. So, it was really miraculous that they found the phone and they got it to me from Dubai to Paris on my holiday. So 3 दिन मेरे गुजरे इस anxiety में कि वो phone मिलेगा कि नहीं, and वो मिल गया. Or a huge round of applause for Emirates and their system. It was absolutely admirable. Fantastic, guys. Job well done. So, yeah, so why do you need your phone? You need a phone because you need to be in touch with people behind you've left behind. But अगर आपको उनसे राब्ता मुनक़ता भी करना है and you don't want people calling you, you need your phone for data. And this is my next point actually, that data ज़रूर assemble करें, तस्वीरें ज़रूर लें, videos ज़रूर लें, लेकिन don't get into that high hysteria of taking pictures and posting right at that same time. Because you're going to miss out the scenery, you're going to miss out that moment. आप डेटा लें, तस्वीरें खींचें और फिर या तो रात को अपना फारिग होके पोस्ट करें या फिर वापस आके पोस्ट करना शुरू करें. कोई जल्दी नहीं है, आपका ट्रिप कहीं नहीं जाएगा, आपकी मेमोरीज कहीं नहीं जाएंगी. You'll probably be able to express them better, make better reels, edit pictures better. So don't be in a hurry to post. Just take your pictures, come back at leisure and then post. So that was my travel piece. That was my tips on holiday travel advisory, what to do, what not to do. I hope that didn't bore you. I hope that these were things that you will enjoy and learn from. And yeah, so until next time, happy holidays.